वॉल्यूम से करा रहे सर हमने रे डायग्राम कराया था। रे डायग्राम सब हो गया ना 6 और 7 फॉर कॉनकेव मिरर्स एंड 2 फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स ठीक है एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी और did we discuss sign convention नो सर okay now let us discuss uses of spherical mirrors ठीक है spherical mirrors पेज नंबर page number 107 किसमें क्या तो अच्छे से क्यों क्या कब से साउंड और एक 17 से क्या एग्जाम हो स्कूल में पहले कैसे हो सकता है सर हमारा ऑफलाइन से हो जाता है थिएटर फेस्टिवल की वजह से लेट कर रहे हैं फाइनल एग्जाम अभी और होगा नहीं हमारे सेकंड टर्म तो सेकंड टर्म में कौन सा चैप्टर आ रहा है तुम्हारा नहीं हो तो हो गया ये अभी हो जाएगा ये तो लेक्चर में हो जाएगा साउंड स्टार्ट करेंगे ये बहुत सिंपल चैप्टर है स्टार्ट विद साउंड ठीक है तो डोंट वरी उसके बाद भी तुम्हारा चलेगा क्लास ठीक है तो आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं इसके ये हो ही गया ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया इसमें कोई बात ही नहीं खाली साइन कन्वेंशन एंड सम फॉर्मूलास सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स पहले तो कॉनकेव मिरर कहां पे यूज करते हैं शेविंग मिरर्स में क्या फेस बड़ा दिखता है ठीक है तो इट इज कॉनकेव कब बड़ा दिखेगा व्हेन द फेस इज बिटवीन focus and pole मतलब mirror has to be kept close it has to have a large focal length so you can comfortably stand near the mirror okay so it is fine then it is also used as a reflector in automobile तो automobile में कैसा होना चाहिए concave mirror होगा so that it will throw the light parallelly at a longer distance okay so parallel beam of light है ना तो light will be kept at the focus so when it reflects it gives you a parallel beam then as a doctor's head mirror what is doctor's head mirror तो यहाँ पे भी सर पे जो लगाता है तो भी जो देख रहा है सामने it has to be focus beam so light will be kept at the focus और वो सामने प्रोजेक्ट करेगा ठीक है बैलेंस and also dentist uses this वो स्पैचुला टाइप का मिरर है वो माउथ के अंदर डाल दे है ना like a spoon so वो जो छोटा सा मिरर होता है डेंटिस्ट जो यहाँ पे जो मिरर यूज करता है दिस इज ऑल्सो कॉनकेव उसमें टूथ विल अपीयर बिगर टू यू डायरेक्टली तो मुंह डाल के नहीं देख सकता है ना तो उसमें क्या है मिरर डाल दिया है तो दैट टूथ विल अपीयर बिगर टू यू ठीक है so that's how it is now uses of convex mirror the uses of it is used as a reflector in street lamps whereas concave mirror is used as a reflector in automobiles तो street lamp में कैसा चाहिए हमको let us say this is your convex lens and the light is here so when it falls on the mirror it gets scattered है ना तो street lamp में क्या होता है उसका इमेज क्या होता है फोकस पे यार understood so here the light is scattered whereas concave mirror में जब ऐसे reflector यूज होता है तो क्या होता है the source is kept at the focus and it is thrown parallelly like this ठीक है so both are reflector but the application is different this is street lamp and this is automobile lamp okay convex mirror is also used as rear view mirror in the automobiles the street lamp and this हाँ वाइड के टैंक पे फिर तुम उसको ऐसा भी कर सकते हो अप डाउन करता है उसमें अपर डिपर उसमें वो कर सकते हो लेकिन जहाँ पे तुमको हाई बीम चाहिए फोकस्ड एट अ लॉन्गर डिस्टेंस देन यू यूज
रियर व्यू मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज यू गेट अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, है ना? सो रियर व्यू में क्या होगा? मान लो तुम्हारा ये रियर व्यू मिरर, अब तुमने उल्टा बनाया, यहाँ पे कहीं पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? Go away from focus. और दूसरा कहाँ जाएगा? सी पे. If the object is coming from here, है? तो वापस यही डायरेक्शन से चला जाएगा. तो इसको तुम एक्सटेंड करोगे, तुम्हारा वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगा? इधर पे. तो जो भी पीछे से व्हीकल आ रही है, ये रियर व्यू में तुम इधर बैठ के ड्राइव कर रहे हो सामने, तुमको इसमें इमेज कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा. जो भी पीछे से तुम्हारे ऑब्जेक्ट आ रहे हैं उसका इमेज यहाँ दिखेगा. ठीक है, समझ आ गया? तो पूरे का पूरा दिख जाएगा. तो डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल. ये समझ आया कि नहीं? ये कॉम्प्लिकेट हो गया. ठीक है, इमेज फॉर्मेशन अभी मिरर को हमने उल्टा बनाया. लिखते टाइम कैसे बनाया था? लेफ्ट टू राइट. ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, सो दिस वी ऑलरेडी कवर्ड. टेल मी व्हाट टाइप्स ऑफ इमेजेस आर फाउंड इन कॉन्केव मिरर? रियल, वर्चुअल और बोथ? कॉन्केव मिरर. real as well as यस. real inverted. Okay, real inverted, virtual erect, all kinds of image formation takes place in concave mirror. What about convex mirror? Only virtual. And what is the difference between virtual image formed by concave mirror and virtual image formed by convex mirror? The image formed by concave mirror is magnified and formed by concave mirror. Convex mirror. Convex mirror is highly Diminished, not highly diminished. If it is highly diminished, then it will be highly magnified. so highly diminished when the object is very far. But in vehicles, the object are not that far. They are behind you, but not that far. Okay? So highly diminished as well as diminished. So in short, in convex mirror, the virtual image is shorter than the concave mirror. Okay, concave mirror में हमेशा magnified. Okay. Next is sign convention. Did we discuss that? Okay. Next is sign convention. So for sign convention, we follow this rule. You're familiar with x-axis and y-axis while plotting a graph, correct? So the intersection of x and y-axis, the origin is taken as pole of the mirror. Yeah. This origin is now pole of the mirror, right? And incident ray is considered traveling from left to right. Incident ray. Okay. Incident rays are always taken in all the ray diagrams that we have drawn. It was always from left to right. On x-axis, right? What is x-axis in your graph? Here it is principal axis. Okay. So principal axis पे we keep the object and the image is also obtained on principal axis, right? So we measure on x-axis what distances we measure? We measure focal length, object distance and image distance. These three distances we measure on principal axis or x-axis. The distances are always measured from pole. If the distance is to the left of pole, it is taken as negative. Sign is negative. So mostly the object is always left of pole.
So U is always negative. ठीक है? The sign convention for U is always negative. What about F? Now we know that if it is concave mirror, the focal length is on the left side, and for convex, the focal length is on right side. So F is negative for concave. F is positive for convex. Okay. What about V? So for real images, V will be formed on this side after reflection. Okay. So concave mirror में reflection कहाँ पे होगा? Left side में. All the images will form in the third quadrant because it is real and inverted. So V is negative for real image. क्योंकि रियल इमेज कहाँ पे बनता है? यहाँ पे बनता है. और ये बनता है फ्रंट में. यहाँ पे बनता है थर्ड क्वार्टर में. तो फ्रंट में भी बनता है और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है? एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है? इधर बनता है, बिहाइंड द मिरर. है ना? वर्चुअल इमेज अपराइट. तो वर्चुअल इमेज का साइन V क्या होगा? V इज इमेज डिस्टेंस, है ना? U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. फोकल लेंथ is image distance. ठीक है? ये होगा. और y एक्सिस पे हम क्या क्या मेजर करते हैं? y एक्सिस पे भी मेजर size of object and size of image. O is the जो AB लिखते थे ना हम ऐसे, ये कहाँ पे आया? y एक्सिस पे आया. Above principal axis is taken as positive. तो इमेज भी तुम्हारी जो ऊपर आएगी वो क्या होगी? पॉजिटिव. जो भी इमेज नीचे बनती है उसको हम क्या लेते हैं? नेगेटिव. दोनों साइड में. समझ आ गया? तो रियल एंड इन्वर्टेड मिरर के केस में सब इधर बनता है. लेंस के केस में यहाँ बनेगा, वो तुमको नेक्स्ट ईयर. लेंस का भी है. ठीक है? तुमको दो ही टाइप की इमेज है. ठीक है? या तो नीचे बनेगी या ऊपर बनेगी. वर्चुअल के लिए राइट. तो आई यहाँ पे ये अगर इमेज है तो आई इसका क्या होगा? पॉजिटिव और वर्चुअल इमेज. और रियल इमेज में आई क्या होगा? नेगेटिव. और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव. ठीक है? समझ आ गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है. सो ऑब्जेक्ट हाइट is always positive. ठीक है? इट इज मेजर्ड ऑन y एक्सिस. P से ऊपर जो भी है पॉजिटिव, P से नीचे नेगेटिव. ये तो y और y डैश है. नेगेटिव वैल्यूज ऑन द वर्टिकल एक्सिस इज नेगेटिव ऑन द लोअर देन x एक्सिस. Then image size or height we represented by symbol I. O for object, I for image. So I is positive for virtual image. ठीक है? I is negative for real image. Because real is always said inverted, so वो below principal axis होता है. जो भी below principal axis है. Is that clear? तो horizontal distance में हम तीन मेजर करते हैं, F, U and V.
वर्टिकल डिस्टेंस में हम दो ही मेजर करते हैं, O एंड R, ऑब्जेक्ट का हाइट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ। अब ये साइन कन्वेंशन हम कहां पे यूज करेंगे? we'll use it in mirror formula and magnification formula. There are two formulas. कौन सा फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला में यूज करें। It relates focal length with object distance and image distance. The focal length, the image distance, and the object distance is related by this formula. Derivation is not in the scope. You just have to use this formula. So this formula, mirror formula, gives a relation between focal length of the mirror, its image distance, and its object distance. Okay. There is one more formula called magnification formula. What is it? M. It is given as the ratio of image size to the object size. Okay, that is M is equal to image by I by O. Mind you, it is not zero, okay? It is not division by zero, it is O. Also, M is given as minus V by. These are the two formulas for magnification. Again, these formulas you have to remember. The derivation is not in scope. Okay, so I by O is equal to minus V by U. So now you can see if it is virtual image, then both I and O will be positive. Correct? If it is virtual image, I and O are both above. So there is a sign convention for M. Okay. M is magnification is positive for virtual image. And M is negative for real image. Why? Because for real image, I will be negative. I will be below. Okay. So in question, sometimes only the nature of image is given to you, and you have to then apply the sign convention. So how many sign convention you have to keep in mind? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. It's actually fairly simple. When you start solving numerical, it will get stored in your head. And apart from these sign convention, you have to remember these two formulas. You have to apply sign convention in this formula while you're solving numerical using this formula. Okay. And you have to be careful. Sign has to be applied only for the given data. Okay. Unknown sign you have to obtain by calculation. Okay. Unknown sign has to be calculated by calculation only. Sign has to be applied only for given data. Because in question, the data sign will not be given to you. That you are supposed to apply yourself. Okay. So with this, we are good to solve the variables. Okay. Somebody went out. No. So let us solve the variables. Did we do example 1, example 2 and all that? No, let's solve the variable. So go on page number 102.
Are you writing the sign convention or writing still? लिख लिया सबने? Can I erase the board? Or at least this side I erase. Okay. So what is example one? So, 1, 2. How many images are formed if two plane mirrors are placed at 45 degrees? So first let us find out n equal to 360 divided by theta. This is equal to 360 divided by 45. How much this would be? So this is, what is 360? 4 times 90 degree, correct? So this is 2 times. So you get 8. So it is even or odd? Even. So when it is even, then what you have to do? Subtract by 1. Okay. Therefore, number of images are n minus 1. So first you find out n. If it is even, then straight away subtract 1. 8 minus 1 equal to 7. That is the answer. So you don't have to worry about symmetric or asymmetric. Okay. When it is odd, then you have to worry about symmetric or asymmetric. For n even, always subtract 1. Okay, example 2 we already did. 4x, 4x, 1 over earlier on. Okay. Example 3. So what is the focal length of a concave mirror of radius of curvature? 16 centimeter. 16.0 it is. So given. So always start with the name of the mirror. Given concave mirror. R is equal to 16.0 centimeter. So what is R? 2 times focal length. And will it be positive or negative? Negative. Because it is concave. Right? Therefore F is equal to minus 16 by R by 2 होता है focal length. It is minus 8 centimeter. ठीक है. तो concave mirror का focal length 8 centimeter. ठीक है. So you can also write the answer as just 8 centimeter, but it has to be negative for concave mirror when you are using it in the problem. Okay, right now it is R by 2. Okay, but you can write it as minus 8. That's not an issue. Okay, question number 4 or example 4. So there are two examples, 4 and 5. So you have to now first capture the given data. At what distance in front of the concave mirror of focal length 10 centimeters? What is given here again? Start with the name of the mirror. Concave mirror. Name of the mirror will help you choose the sign convention, proper sign convention. Then you have F is equal to what is given 10 centimeters. So what sign you will take? Plus or minus? Minus, because it is concave. Numerical sign is not given. It is minus 10 centimeters. An object be at what distance so that its virtual image
of size 5 times that of object is obtained. That means virtual image है मतलब m is equal to 5 is given. Okay, image 5 times that of object is given. That means m is equal to plus 5 is given. It is virtual. So m is positive or virtual. Okay. So this is m is 5. Then what is given? What you have to find out? Where it is placed. Means you have to calculate u. Okay. This is what you have to find out. So at what distance you will place the object? Okay. In front of concave mirror of focal length minus 10 centimeters, such that its image is 5 times the size of object. Solution, how will you solve it? The first, which formula you will use for f? Since m is equal to 5, therefore, what is the relation? Minus v by u is equal to 5. Therefore, v is equal to minus 5u. From this data, you actually get this relation. V is equal to minus 5. Now, further, 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. And you have to find u. So eliminate v. So therefore, 1 by f minus 5u plus 1 by u. This is what you need. Because what is v? We want minus 5. Okay, so data mein you were provided with m. But we know this relation of m. M is equal to minus v by u. कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन देता है indirectly they will give you phase distance and object distance का relation. ठीक है, अब हमारा u में हो गया एक ही वेरिएबल. Now you can solve it. So what is it now? इसको 5 और ये कर दो. ये क्या हो गया? This is equal to 1 by u minus 1 by u minus by ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 5u. ये हो गया 5 है ना? माइनस 1. ये हो गया minus 1 by. करेक्ट? कितना हो गया? 4 by 5u. So अभी क्या हो गया? 5u is equal to 4 into 10. ठीक है, तो u equal to क्या हो गया? 8. 2 minus 8 था. So we have calculated. We were expecting u to be negative always. तो u का साइन नेगेटिव ही आना चाहिए कैलकुलेट करके. समझ आ गया? ऐसे. Is that the answer? So इसमें mostly you will go wrong in choosing the correct sign, or you will go wrong in doing this fraction calculation. यही गड़बड़ करते हो. तो सबसे पहले तो you have to actually apply correct sign. तो एक बार साइन गलत हो गया, आंसर कभी सही नहीं आएगा. दूसरा, in the calculation you have to be careful. ठीक है? Now try to do example 5. पहले ये कर लो, उसके बाद example 5. This is understood. Absorb it. See the steps. Start from the name of the mirror. Capture the data with appropriate sign. Obtain everything, and here the image nature is virtual. Therefore, m is taken as positive. If the image was real, then m has to be negative. ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी डेटा में साइन नहीं दिया क्वेश्चन, ऐसे ही आएंगे सारे क्वेश्चन. So do the next question yourself.
So how will you capture the data? What is given here? Convex mirror. This is example 5. तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है? Direct image. So m is 1/3 and it will be plus because erect किसका होता है? Virtual का होता है ना? Erect क्या होता है? So it will be plus 1/. Radius of curvature कितना दिया है? 46. 36. Therefore f कितना हो गया? 18. 36/2, which is 18 cm, and it will be plus because it is convex form. ठीक है? तो ये हो गया. हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर से कभी कभी फोकल लेंथ डायरेक्टली ना देके रेडियस दिया, ये मिल गया. फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब तुमको क्या निकालना है? u इज इक्वल टू, तो हमारे पास f है, हमारे पास मैग्निफिकेशन है और u निकालना है. तो नाउ एग्जैक्टली डू द सेम स्टेप्स. v और u का रिलेशन निकालो, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो. Yeah. Yes. Sir, minus 36 centimeters. Oh yeah. Very good. Okay. So most of you have cracked it. It is exactly same as this. Okay. You have not? Have you done? Again, minus 36. Chalo. Now we'll do classwork numericals. Right? There are about 10. And we have about 15. We should be able to do it. Okay. Let's go quickly. Are you okay? Don't you have confidence in your abilities? Don't say. चलो ये मिटा दो अभी. साइन कन्वेंशन सबने लिखी है, ठीक है? अगर मैं So this is the question from the volume. Solution is given. This is on page 111. What is going on? Is everything all right? Okay. The first question. So what is given in the first question? You have an incident ray and the reflected ray from a mirror. They are mutually perpendicular to each other. So let us say you have a mirror
You have an incident ray. And reflected rays. So what is given in the question? I plus R is 90 degrees. Usually for 45 degrees. 45. I plus R given to you is 90 degrees. But I is equal to what? By law of reflection. Correct? Therefore, 2I is equal to 90 degrees. Okay? So you have made use of laws of reflection. चलो second वाला करो. पर इसको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट ये डायरेक्ट आंसर है डायरेक्ट आंसर लिख दो. हमें पता पहले है वाले का 1 मीटर बिहाइंड द मिरर प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में क्या होता है? इमेज डिस्टेंस इज सेम एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ. तो सेम बट बिहाइंड द मिरर. तो 1 मीटर बिहाइंड द मिरर. भले तुम उसको शो कर सकते हो ऐसे. The image will be 1 meter behind them. Okay. सेकंड वाला दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 1 + 1 2 ठीक है. So this is B. We can illustrate it. 3 मीटर प्लस इनसाइड What is going on? सर सेकंड वाला भी समझ सर कौन सा वाला है? 70 गरम नहीं सर कोई और पंखा लगा सर बाद में प्लीज सर तुम लोग यार ठंडी या धूप सेकने आप क्या करते हैं आप? Think about what you have come here for. सर पढ़ना है ठीक है. So have patience. सर बाद में प्लीज अभी भी थोड़ी देर Okay. क्या Your voice sacrifice is more on us. सर चाहिए तो लास्ट वाला चलो. Question 2 done. Okay. Question 3. Question 3. State the number of images of an object placed between two mirrors formed in each case when the two mirrors are inclined. So first find n. Question 3 में. ठीक है. When theta is equal to 90 degree or theta is equal to 90 degree, n is equal to कितना आ गया? 4. Even है. So number of images क्या हो गया? You have to write the proper steps. N minus 1, that is 4 minus 1 equal to 3. B में क्या है? 16. So or theta equal to 60 degree. This is how you have to write. What is n? minus 12 is equal to 5 In both cases, you are getting even values. 6, 5 is 6 over. N is even. 5 That is even. That is even. Therefore, number of images
is equal to क्या चल रहा है? Very झटक दिया। Then we need to झटक। मैं तुझे झटक दूं क्लास के बाद। तो चलिए तो झटका तो लेकिन कभी अच्छा झटका झटकी नहीं करने का यहाँ पर। चल रहा है। इधर अटैक किया तो मुझे भी तेरे को झटकना पड़ेगा क्लास के बाद, तब क्लास चलेगी। नेक्स्ट घर में देखे ना इसके कपड़े वॉश करने के। नहा के कहाँ गिर रहे हैं कपड़ों पे नहीं लग नहीं नहा के भी आना उसे वाटर यूज कर लिए। और ये भी कंडीशन रखना मैं जहाँ नहाता हूँ वहीं पे सोता हूँ और खाता हूँ। टाइम पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 45 इज फोकल। अब ये क्या क्वेश्चन है यार? आंसर बताओ। 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर देखा वही है क्या? ये नाम 20 सेंटीमीटर प्लस या माइनस? और प्लस कितना है? प्लस एफ क्या होगा? r/2 हमेशा इसका इक्वल टू हाफ 20 होता है 20 सेंटीमीटर। ठीक है कॉन्वेक्स है ना ये, प्लस ही है। ठीक है देखो अगर मिरर का नाम मेंशन किया हुआ है कॉन्वेक्स तो उसमें फिर साइन लिखने की जरूरत नहीं। मिरर का नाम मेंशन नहीं कर रहे हो आंसर में तो फिर साइन लिखना होगा। ठीक है चलो नेक्स्ट। कल तो कॉन्केव लिख के पॉजिटिव लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं कॉन्केव लिख के पॉजिटिव? कॉन्केव में तो नेगेटिव होता है, कॉन्केव लिख के पॉजिटिव कैसे लिखे? कॉन्केव में नेगेटिव है। ठीक है मतलब कॉन्केव लिख मिरर का नाम लिख के वैसा बोल रहे हैं हाँ ये ऐसा है आंसर में वो साइन नहीं दे रहा है। लिख सकते हैं अगर कॉन्केव लिखा है कॉन्केव का फोकल लेंथ विदाउट साइन हाँ देख मैं दूंगा तो मार्क्स नहीं। ठीक है सेफर टू बी विद साइन। ओके 5 एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर मतलब क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट का हाइट O इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर गिवन है तो प्लस होगा कि माइनस? ऑब्जेक्ट का हाइट का साइन क्या होगा? ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर माइनस होता है प्लस होगा तो वो इज प्लस। एंड कहाँ पे प्लेस किया है? U इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ तो कॉन्केव मिरर तो फोकल लेंथ क्या होगा माइनस या प्लस? -12 सेंटीमीटर क्योंकि कॉन्केव मिरर। क्वेश्चन में कॉन्केव मिरर मेंशन किया इसलिए फोकल लेंथ क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव नेगेटिव। अब हमने को निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ। तो V नेगेटिव आएगा तो नेचर वैसे भी क्या होगा? रियल या वर्चुअल? वर्चुअल रियल वर्चुअल का मतलब बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड होगा P के राइट में तो प्लस हो जाएगा। V नेगेटिव आएगा तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा तो नेचर हमको उससे मिल जाएगा। ठीक है नेचर में दो चीज बताते हैं टाइप ऑफ इमेज एंड इसका साइज। ठीक है नेगेटिव हुआ तो रियल होगा पॉजिटिव हुआ तो वर्चुअल। यस क्योंकि रियल में क्या होता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है। ठीक है तो निकालो पहले V। सो सॉल्यूशन 1 by F equal to 1 by V plus U या V plus ऐसे लिखो
कुछ भी चलेगा, प्लस है ना ये। So, अब सब्स्टिट्यूट करो, 1/-12 -20 प्लस 1/, कितना आ गया? यो, क्या आएगा आंसर उसका? 60 है ना? इसके हो गया 3 और ये हो गया 5, कितना आ गया? -2/60 -1/20, ये हो गया 1/b। b कितना आ गया? -30 है, तो b नेगेटिव है, तो कैसा इमेज बनेगा? रियल रियल एंड इनवर्टेड। इन्वर्टेड। और साइज निकालना है तुमको। सर रियल इमेज कभी अपराइट में होती अरे क्या सवाल कर रहे हो? कब पता है रियल अपराइट होता है? रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, ये रटना नहीं है, ये समझ जाओगे, रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड। क्वाड्रेंट में रियल कहाँ बना था? थर्ड क्वाड्रेंट में, लेफ्ट के नीचे बना था प्रिंसिपल एक्सिस। तो नीचे वाला क्या इन्वर्टेड? सारा राइट रे डायग्राम देखो, रियल इमेज कैसा बनता है? उल्टा। तब वही इन्वर्टेड। लाइट इंटरसेक्ट तभी करेगी जब मिरर के फ्रंट में रिफ्लेक्ट होगी, और डाइवर्ज हो रही है तो पीछे वर्चुअल बनेगा। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और थर्ड में बनता है इमेज, और कहीं नहीं, मिरर के केस। तो हमारा भी आ गया। अब साइज निकालने के लिए क्या करोगे? सेंस m इज इक्वल टू I/O, therefore minus V/U is equal to I/O। ठीक है, तो हमको इसमें से क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास O है, और हमको साइज ऑफ इमेज निकालना है ना। इमेज का डिस्टेंस, इमेज का साइज, इमेज का नेचर निकालना है। I इक्वल टू क्या हो गया? -V/U इंटू O। सब कुछ दिया है। V कितना निकाला हमने? -30। U कितना गिवन है? -20। सब माइनस वाला, और ऑब्जेक्ट कितना दिया? 2 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव होगा। सब कुछ साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना है। ये सब खत्म हो गया, तो क्या हो गया? -3। तो आई का साइन, इमेज का साइन माइनस आ रहा है, मतलब इमेज क्या है? इन्वर्टेड। ठीक है, तो इन्वर्टेड है मतलब रियल है, तो सिंस आई इज नेगेटिव, तो तुम बी नेगेटिव उससे भी कंक्लूड कर सकते हो, है ना? सर तो ये बात करते भी है। करने की जरूरत है क्योंकि पूछा है साइंस। 10 nature of images is real and imaginary। मैग्नीफाइड है कि नहीं? मैग्नीफाइड है कि नहीं? इमेज मैग्नीफाइड नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको आंख से दिखता नहीं है बोर्ड पे क्या लिखा है। ओ का साइज क्या है? ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। इमेज का क्या है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस साइन सिर्फ नेचर बताता है, इन्वर्टेड। मैग्नीट्यूड क्या है? 3, तो इमेज क्या हुआ? मैग्नीफाइड हुआ। रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, हमेशा आई में जो साइन है वो क्या बताएगा? सिर्फ नेचर, इन्वर्टेड है कि अपराइट, नंबर नहीं है। इट्स नॉट नंबर ऑफ द नंबर लाइन, समझिए? दैट्स हाउ साइन कन्वेंशन इज ओनली गिविंग द नेचर ऑफ। ठीक है, नहीं समझे? मैग्निफिकेशन में और इमेज रिलेटेड डेटा में जो साइन है वो सिर्फ क्या देता है? नेचर ऑफ इमेज। चलो
उसके बाद क्या करना है हमें? Do we have time for one more numerical? So देखो आंसर कैसे लिखा है फिफ्थ का 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हमारा आंसर क्या है -30। तो समझ जाओ माइनस का मतलब हो गया फ्रंट ऑफ द मिरर। फिर क्या दिया है 3 सेंटीमीटर हाई। 3 सेंटीमीटर हाई क्या है साइड ऑफ इमेज। फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तीनों चीज इमेज से है रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ठीक है सब। चलो क्वेश्चन 6 ट्राई करो तुम रिमेनिंग टाइम में। अभी ये तुम खुद से ट्राई करो पढ़ गिवन डेटा लिखो और ट्राई करो। आ गया तब सबसे पहले तो फोकल लेंथ क्या गिवन है 25 सेंटीमीटर प्लस या माइनस प्लस। माइनस क्योंकि कॉनकेव मिरर यही गलती होती है। तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ तो फटाफट हो रहा है एक खुद से सॉल्व करो। एफ लिखो पहले लिखो कॉनकेव मिरर गिवन कॉनकेव मिरर फिर लिखो एफ इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कॉनकेव मिरर में कौन से केस में साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रहता है तभी होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब फ्रंट में हो गया तो इमेज कैसा बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। यानी एम तुमको क्या लेना पड़ेगा -1। समझे यहाँ पे तुमको एम क्या लेना पड़ेगा -1 क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है फ्रंट में। तो लिखो यहाँ पे लिखो एम इज इक्वल टू -1। ये भी गिवन है तुमको ये जज करना पड़ेगा। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अब एम इक्वल टू -1 हो गया। अब तुम्हें क्या निकालना है यू निकालना है। तो एम इक्वल टू -1 हो गया तो बी यू का रिलेशन मिल जाएगा बी विल बी इक्वल टू -u। अगर तुम्हारा एम इक्वल टू -1 है तो v क्या हो जाएगा -u। नहीं -v/u इज इक्वल टू -1 तो v इक्वल टू u होगा। क्या आएगा क्योंकि m के फॉर्मूला में m इज इक्वल टू -v/u तो -v/u इज इक्वल टू -1 therefore v इक्वल टू u आएगा। बस अब ये यूज करके निकाल लो। ठीक है ना तो ये क्या होगा 1/u प्लस 1/u मतलब 2/u इज इक्वल टू 1/m। ठीक है 2/u इज इक्वल टू सो u इज इक्वल टू 2f हो गया। मतलब कि आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारा 50 आ गया। 50 आएगा कि -50 आएगा -50 आएगा। बुक में लिखा है 50 जब तुम कैलकुलेट करोगे तो -50 आना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हमेशा क्या होगा यू हमेशा नेगेटिव ही होगी। तो तुम हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ जाओ। बुक में आंसर कैसे लिखा है वो छोड़ दो। ठीक है यू ऑलवेज कैलकुलेट विद साइन कन्वेंशन। तू समझा नहीं अब एक बार ना केमिस्ट्री मैम ने पार्थ को ना पार्थ बोल रहा हूँ केलव को ना बुलाया था कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। केलव यहाँ पे ऐसा खड़ा है ऐसे तो Like, क्या he was like कि क्या करूं मैं कहाँ खड़ा हो गया मैं what are these all these people doing? चलो चल ना हम लोग नए लोग पर
अबे वो सिर्फ भैया ने बोला वो कर, मैं वो स्टॉप कर रहा हूँ भैया। आता है क्या?